everybody's been talking about the movie Pink. सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग अच्छी अच्छी चीज़ें लिख रहे हैं इस फिल्म के बारे में, एंड एवरीबडी इज़ गोइंग एंड वाचिंग दिस फिल्म. सो कल मैं भी गया. आई ऑल्सो वेंट एंड वॉच्ड द मूवी. बट यू नो व्हाट गाइस, आई डिड नॉट फाइंड द मूवी वेरी हार्ड हिटिंग. मे बी सरप्राइजिंग फॉर श्योर, बट मेरे ख्याल से इस तरीके की मूवीज़ जो होती हैं विच आर अबाउट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स, which are about sending a message to the society, which are about reflecting what our society is like, वो बहुत hard hitting होनी चाहिए. By hard hitting, what I mean, I will tell you that, but because this is kind of a movie review, let me just tell you what the plot is. होता क्या है that there's a girl who is who's molested by a guy, and she lodges a police complaint, but instead उसी के ऊपर उल्टा केस आ जाता है that her modesty is questioned, her character is questioned, and ये दिखाया जाता है that this girl in fact asked for it, and she's into all of these illicit things for money. So that's what the movie is about. इसमें the setting is in Delhi, of course. Why am I not surprised? It's in Delhi, the crime capital of India, you can call it. एंड एक बहुत ही कोई रिच बंदा होता है, उसके गॉट पॉलिटिकल कनेक्शंस, जो इन लड़कियों से मिलता है. रॉक कॉन्सर्ट, ही इनवाइट्स देम ओवर फॉर डिनर, एंड देन ऑल ऑफ देम आर हैविंग अ कपल ऑफ ड्रिंक्स, एंड देन द गाय ट्राइज टू हिट ऑन हर, एंड बट द गर्ल ऑब्वियसली, नो गर्ल वांट्स टू बी मोलेस्टेड. यार कोई भी अपनी मर्जी से नहीं करता है ऐसे. सो शी इज ट्राइंग टू पुश हिम बैक हिम अवे, बट the guy is just too strong. So वो क्या करती है, she takes a bottle and smashes it on his head, and the girl along with her friends, they all just run away. And उसके बाद they're just trying to forget this incident, जब उनको threatening calls आने लगते हैं, and they're being harassed. And in fact जो main जो culprit होता है, जो politician का बेटा होता है कोई, या कोई important personality का बेटा होता है, उसके जो दोस्त होते हैं वो इस लड़की को किडनैप भी कर लेते हैं, and they molest her again in the car in a moving vehicle. तो ये सब ऐसा दिखाया गया है. So the girl, she tries to approach the police, but the police is not able to help her because she comes from a very normal family, she doesn't have any connections, and so on and so forth. So Amitabh Bachchan, who plays the role of retired lawyer in this movie, he decides to help these girls, and he fights the case for them. Now what happens and all that, I think you can watch the movie, you will come to know. I'll come to the point which is कि मुझे ये फिल्म हार्ड हिटिंग बिल्कुल नहीं लगी. उसका रीज़न है ये कि जब भी ऐसी कोई फिल्म बनती है, मुझे लगता है that it's very important to show that that the culprit and the guys who have been proven as culprits, they need to be given very harsh punishments, because ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है, ये कोई नॉर्मल चोरी वाला कोई केस नहीं है. Any woman who's been even eve teasing हो, molestation तो बहुत दूर की बात है, eve teasing हो या inappropriately touching का वो हो, या sexual abuse हो, all these are very very heinous crimes, and the people who commit these crimes have to be punished seriously. अब वो क्या punishment है वो बताना और दिखाना बहुत ज़रूरी है according to me. I'll cut to the last scene of this film. The people who have seen this movie will understand what I'm talking about. Last में क्या होता है that the culprits, the main guy who commits this crime, और उसके दोस्त बैठे रहते हैं, who are also party to the crime. उनका lawyer होता है, who's played by the actor Piyush Mishra. वो closing argument देते हैं जज को that these girls are of a questionable character. एंड इस मूवी में ऐसा दिखाया गया है जो सही बात है कि हमारे यहाँ पे एक एजम्पशन बना लेते हैं सभी लोग कि if the girl is wearing short clothes then she's of not a good character, if she's drinking then she's a bad girl, or if she's coming back late from her work then bilto something is definitely wrong. So इन सबको माइंड में लेते हुए he tries to prove to the court that indeed it was the girl's fault and not the guy's fault, and that the girl, the main victim, should be punished for 10 years, और उसके जो friends होते हैं उनको they have to be punished for 6 months each. उसके बाद अमिताभ बच्चन puts forward, the lawyer played by Amitabh Bachchan, his name is Mr. Sehgal, is a retired lawyer. He puts forth the closing argument for his client, the victim, Meenal, who's played by Taapsee Pannu, saying that जब
जब भी कोई लड़की नो बोलती है तो उसका मतलब होता है नो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, आपका कोई अफेयर हो, कोई सेक्स वर्कर हो, या कोई भी हो, एनीबडी, फ्रेंड हो. इफ शी इज सेइंग नो, इट ब्लडी मीन्स नो, which means you simply cannot do, you know. No means no. But यहाँ तक तो ठीक है. इसके बाद why I did not find the film hard hitting is because the judge says that the court finds all of these three guys guilty, and a punishment and a sentence, sorry, not a punishment, a sentence shall be issued to them later. ये दिखाया नहीं जाता है कि उनको क्या सेंटेंस दिया गया है, क्या पनिशमेंट दिया गया है. मेरे ख्याल से दिस इज अ वेरी रॉन्ग मैसेज सेंट. व्हाई आई विल टेल यू. The reason being first that the guy is shown as having come from, that he comes from a very rich or an influential family, probably a political family. First that. Secondly, अगर इतना बड़ा crime कुछ हुआ है, so you better at least on celluloid to make sure यार that you are showing that the guy is severely punished and he is being put behind bars for the rest of his life, or probably being hanged to death. बिकॉज सीरियसली वो इतना ही सीरियस क्राइम होता है, ऐसे ही करना चाहिए. एटलीस्ट ऑन सेल्यूलाइड यू शुड शो दैट, सो इसीलिए मुझे आई डेंट फाइंड द मूवी वेरी हार्ड हिटिंग. बट देन 24 आवर्स लेटर नाउ आई एम थिंकिंग दैट ऐसा कुछ तो रीज़न होगा क्यों दिखाया ऐसा. एक रीज़न ये हो सकता है कि ठीक है, लॉ का वो प्रोसीजर होता है दैट सच में कोर्ट में, मैं कभी कोर्ट गया नहीं हूँ, मैंने केस देखे नहीं है, सो मे बी आई एम लिटिल लेस इन्फॉर्म. ऐसा होता होगा, प्रोसीजर होता होगा दैट द सेंटेंस इज गिवन लेटर, ऑफ कोर्स हो सकता है. बट अभी 24 आवर्स लेटर आई एम थिंकिंग अबाउट इट एंड आई रियलाइज कि फिल्म में ऐसा क्यों है. एंड द रीज़न इज़ दिस. सो माई वाइफ स्वप्ना, शी आस्क्ड मी टू गो बैक 28 years बैक इन टाइम and watch a movie called The Accused, which was released in 1988 and which starred Jodie Foster in the lead role, in which she plays a girl who's a victim of a gang rape at a local pub. Now, if you watch the movie The Accused, which was directed by Jonathan Kaplan, the characters, the scenes, the plot, the screenplay, some of the dialogues, everything looks almost the same in Pink. I'm not saying that Pink is a copy of that movie. It is not, because यार come on, stories और ideas जो हैं वो limited ही रहते हैं. But movie कहाँ पे different होती है is the way आप scenes का screen play कैसा है फिल्म का, dialogue कैसा है फिल्म का, characters कैसे हैं आपके, what are they talking about. So all of these things make a story and an idea different from one filmmaker to the other. But you should watch The Accused. Why? Because you'll know that the no का जो उन्होंने जो emphasis दिखाया उसमें वो भी उस फिल्म से लिया गया. I'll tell you what happens in that movie. There's a court scene where the lawyer asks Jodie Foster, the victim, that while all these men were abusing you, you're being gang raped, you didn't shout for help, you didn't say police, or you didn't try to run away or do something. What did you do? What did you say? So Jodie Foster just says that I said no. So जब मैंने पिंक देखी और उसमें I saw that although it definitely works in the context of the film and all that, but यार Bollywood, please कुछ तो please try and do something original, guys. Why do you have to सब हमेशा हॉलीवुड से लेने की क्यों कोशिश करते हो यार. Please try and do something new. So that is why I did not like the movie Pink. Now especially after watching The Accused, I don't like it at all. Of course, the performances by Amitabh Bachchan and Taapsee Pannu and all the other actors, in fact, everything is good. But the movie, if I don't look at the Hollywood movie, if I look at Pink as just a movie, also पहली बात तो ये कि मुझे तो हार्ड हिटिंग नहीं लगी. उनको पनिशमेंट दिखाना चाहिए था कि उन सालों को फांसी दे दी गई है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेंड आउट दैट मैसेज. बट ऐसा आपने किया नहीं. डायरेक्टर साहब अनिरुद्ध रॉय चौधरी एंड द प्रोड्यूसर शुजित सरकार साहब, आपने एक्यूज्ड का सीधा वही निकाल के उसमें डाल दिया है पूरा, ऐसा ही लगता है. तो क्या है, तो इसमें फिर what is so new about it? There's nothing very new about it, nothing so special about it. And हार्ड हिटिंग बनानी चाहिए थी थोड़ी, बिकॉज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. हमारे यहाँ पे वर्ल्ड ओवर दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट एवरीवेयर. इट्स नॉट कि इंडिया में ही ऐसा हो रहा है, बट बिकॉज वी ऑल नो, ये हमारे अंदर की बात है यार. दिल्ली में आए दिन यही रोज़ होता रहता है, हर सिटी में हो रहा है. women are being abused, women are being raped freely,
मोलेस्टेड, ईव टीजिंग होता ही रहता है. तो एटलीस्ट इसमें तो आप रियल लाइफ में तो पता नहीं क्या होता है, जुडिशियल सिस्टम और लॉ टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम एंड कुछ भी हो सकता है. बट एटलीस्ट ऑन स्क्रीन यू हैव टू यू आर अ फिल्म मेकर, यू हैव टू शो that these boys are severely punished, you know. All it takes is that, and that's why the film disappoints me. I don't know, there's nothing cinematic और मूवी एक्सपीरियंस देखने लायक तो कुछ है नहीं. तो आप घर पे भी DTH पे आएगा तो आप देख सकते हैं. You don't have to go to the theatre and really watch Pink. Okay, overall maybe I've just rated maybe 2.5 out of 5. That's it. Yeah, not more than that. That is an average. Yeah. So yeah, that was my review for Pink. I don't know, I hope I'm no cinema genius, but yeah, I hope I could connect with some of you guys. Yeah.